फोल्ड होता है, फॉल्ट होता है, जॉइंट होता है, ये सब होता है। तो फॉल्ट एंड फोल्ट एंड जॉइंट कैसे बनता है, किसी को कोई आइडिया है? तो कितना सारा प्लेट होता है? फर्स्ट होता है मेरा स्पेसिफिक प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, बहुत सारा प्लेट टेक्टोनिक होता है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक जब एक दूसरा का जब पास में आ जाता है ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, तब मेरा फोल्ट ये सब प्रोड्यूस होता है। तो देखो जो कितना सारा प्लेट होता है, एक होता है स्पेसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, what इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, उसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, इस 7 टाइप्स ऑफ प्लेट है। में देखो फोल्ड क्या होता है। These are the one of the most common geological structure found in the rocks. These are the best display by the stratified formations such as the sedimentary or the volcanic rock, or they are the metamorphic equivalent. When the set of horizontal layer are subjected to the compressive force, they bend either upward or the downward. That is the granite, gneiss, quartzite, schist, limestone, etc. are the common. In which the fault the occur. ठीक है, जब मेरा दो रॉक्स दूसरा के पास आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। द 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे सपोज कोई भी टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरा के पास आ जाता है तब फोल्ट प्रोड्यूस होता है। इसके लिए कंप्रेसिव फोर्स जो होता है जनरली इसके लिए फोल्ट प्रोड्यूस होता है।
तो देखो जब कोई सपोज मेरे पास कोई रॉक है, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डिफॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखो जी ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग एंटीक्लाइन बोलते हैं, बॉटम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइन। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ना, जो बंद करके फिर से ऑन कर। रुक जा, थोड़ा ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखो फॉल्ट क्या होता है,
These are the one of the most common geological structures found in the rock. These are the best displayed by the stratified formations such as the sedimentary और volcanic rock. ठीक है, उसे स्ट्राइक एंड द डीप क्या होता है? डीप ऑफ द स्ट्रेटम, डीप क्या होता है? डीप ऑफ द स्ट्रेटम इज द एंगल बिटवीन द बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये बेडिंग प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. द डीप ऑफ द स्ट्रेटम इज द एंगल बिटवीन द बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, ये देखो ये मेरा बेडिंग प्लेन है और ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है. उसके बाद आता है कितना टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ फोल्ड होता है. कितना पार्ट्स ऑफ फोल्ड होता है? होता है मेरा क्रेस्ट एंड द थ्रू. देखो क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट एंड द थ्रू, द कार पोर्शन ऑफ द फोल्ड एट द टॉप एंड द बॉटम आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड द थ्रू. The car portion or the smooth bend or the sharp or the angular. The car portion is the fold at the top, इसको बोलते हैं crest, and the bottom इसको बोलते हैं through. ठीक है, देखो स्ट्राइक किसको बोलते हैं? द स्ट्राइक ऑफ द बेड इज इट्स द टेंस द मेजर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. द स्ट्राइक रेफर्स टू द डायरेक्शन इन व्हिच द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज द बेड ए द फॉल्ट एंड द प्लेन इज द प्रेजेंट. ठीक है, और when the blade is exposed on the surface, its direction of the occurrence, its the direction of the inclination can be measured by using the clinometer or the ब्रूटन कंपास. ठीक है, ब्रूटन कंपास का हेल्प से हमने स्ट्राइक का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं. किन सा डायरेक्शन है? एक मैग्नेटिक कंपास लाइक इंस्ट्रूमेंट है ब्रूटन कंपास. ठीक है, ब्रूटन कंपास. तो स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक ऑफ a bed is the tends the measure on the horizontal surface. The strike refers to the direction in which the geological structure such as the bed at the fault plane is the present. और डीप क्या होता है? डीप ऑफ ए स्ट्रेटम इज द एंगल बिटवीन द बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन. उसको कितना पार्ट्स ऑफ फोल्ड होता है? जैसे तो मेरा जो कंप्रेसिव फोर्स आता है तो वो ऐसे बेंड करता है फोल्ड, तो उसका जो टॉप वाले पोर्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट. क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. और बॉटम वाले इसको हम लोग बोलते हैं थ्रू. ठीक है, द कार पोर्शन ऑन द फोल्ड एट द टॉप इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट एंड द बॉटम आर कॉल्ड द थ्रू. बाद आते हैं लाइम्स. लाइम्स क्या है? दीज आर द साइड्स ऑफ द फोल्ड. देयर आर द टू लाइम्स फॉर एवरी फोल्ड एंड वन लाइम्स द कॉमन टू द एडजेसेंट फोल्ड. तो लाइम्स क्या होता है? जो साइड्स ऑफ द फोल्ड्स होता है ना, जैसे दो आर्म्स होता है सपोज फोल्ड का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइम्स. लाइम्स क्या होता है? दीज आर द साइड ऑफ फोल्ड. देयर आर द टू, एक मिनट कोई आ रहा है.
These are the sides of fault. There are the two lines for the every fault and the one line the common to the adjacent fault. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा एक्सियल प्लेन. तो एक्सियल प्लेन क्या होता है? दिस इज द इमेजिनरी प्लेन व्हिच डिवाइडेड द फॉल्ट इनटू द टू इक्वल हाफ्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फॉल्ट. ठीक है. अच्छा, लाइन्स क्या होता है? लाइन्स दीज आर द साइड्स ऑफ फॉल्ट. देयर आर द टू लाइन्स फॉर द एवरी फॉल्ट. देखो इस जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन्स. लाइन्स बोला जाता है. This is the imaginary plane which divides the fault into the equal halves. So depending upon the nature of fault, the axial plane may be the vertical, horizontal or the inclined. The axial plane क्या होता है? The axial plane, this is the imaginary plane which divides the fault into the two equal halves. Depending upon the nature of the fault, the axial plane may be the vertical, horizontal or inclined. ठीक है. देखो जो दो लाइन्स को डिवाइड करता है इक्वली उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल प्लेन. देखो मेरा दो लाइन्स है, लाइन वाला पार्ट और द फ्लैंक्स जिसको बोला जाता है, और मेरा एक्सियल प्लेन है. उसका नेक्स्ट आता है मेरा वेव लेंथ. ठीक है. वेव लेंथ क्या होता है? The distance between the successive crest or the through is called the wavelength. Wavelength क्या होता है? The distance between the successive crest or the through is called the wavelength. याद रहेगा? Wavelength the distance between the successive crest. देखो ये एक है और एक ऑपोजिट में थ्रू. तो इस दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ. वेव लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट और द थ्रू इज कॉल्ड द वेव लेंथ. उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा हिंज. द हिंज क्या होता है? द हिंज ऑफ ए फोल्ड इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन ए फोल्डेड बेड. तो मैक्सिमम कर्वेचर कहाँ हो रहा है? इस पोर्शन में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंज.
द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रस्ट और द थ्रू इज कॉल्ड द वेवलेंथ। द हिंज क्या है, हिंज भी हो गया। तो उसके बाद देखो हिंज, द हिंज ऑफ ए फोल्ड इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन ए फोल्डेड बेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस द इंटरसेक्शन बिटवीन द axial plane and the crust or the through of the fold. This means the axis of the line the parallel to the hinges. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो फर्स्ट आता है मेरा कौन कौन सा पार्ट्स होता है, होते हैं मेरा क्रास्ट एंड द थ्रू, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा लाइन्स एंड द फ्लैंक्स, उसके बाद नेक्स्ट एक्सियल प्लेन, उसके बाद वेव लेंथ, उसके बाद नेक्स्ट है हिंज, उसके बाद एक्सिस। तो देखो फर्स्ट मेरा क्रास्ट एंड द थ्रू। तो क्रास्ट एंड द थ्रू क्या होता है, द कार पोर्शन ऑफ द फोल्ड एट द टॉप एंड बॉटम आर कॉल्ड द क्रास्ट and the through respectively। ठीक है, the car portion of the fold at the top is called the crust, the bottom portion is called the through। नेक्स्ट आता है मेरा लाइम्स और द फ्लैंक्स। तो लाइम्स एंड द फ्लैंक्स क्या होता है, दिस आर द साइड्स ऑफ द फोल्ड, देयर आर द टू लाइम्स फॉर द एवरी फोल्ड। ठीक है, और एक्सियल प्लेन क्या होता है, फर्स्ट मेरा क्रास्ट एंड द थ्रू, क्रास्ट एंड द थ्रू। ठीक है, तो क्रास्ट एंड द थ्रू क्या होता है, क्रास्ट द कार पोर्शन ऑफ द फोल्ड एट द टॉप इज कॉल्ड द क्रास्ट एंड द बॉटम इज कॉल्ड द थ्रू। जो हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं थ्रू। नेक्स्ट आते हैं मेरा लाइंस। लाइंस क्या होता है, लाइंस और द फ्लैंक्स भी बोला जाता है इसको। These are the side of a fold. There are the two lines for the every fold and the one lines common to the adjacent fold. ठीक है, लाइन समझ में आ गया सबको? थर्ड है मेरा एक्सियल प्लेन। द एक्सियल प्लेन क्या होता है, दिस इज द इमेजिनरी प्लेन व्हिच द डिवाइड्स the fold into the two equal halves. The depending upon the nature of the fold, the axial plane may be the vertical, horizontal or the inclined। एक imaginary line होता है जो दोनों लाइन्स को डिवाइड करता है, फोल्ड को डिवाइड करता है into the two equal halves. This is called the axial plane. This is the imaginary plane which divide the fold into the टू इक्वल हाफ्स, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल प्लेन। तो एक्सियल प्लेन क्या होता है, दिस इज द इमेजिनरी प्लेन व्हिच डिवाइड्स द फोल्ड इनटू द टू इक्वल हाफ्स। द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोल्ड, द एक्सियल प्लेन मे बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और द इंक्लाइंड। ठीक है, और नेक्स्ट आता है मेरा वेव लेंथ। वेव लेंथ, ठीक है, देखो वेव लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट और द थ्रू इज कॉल्ड द वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट और द थ्रू इज कॉल्ड द वेव लेंथ। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा हिंज। द हिंज ऑफ ए फोल्ड इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन ए फोल्डेड बेड। जब पे मेरा मैक्सिमम कर्वेचर किस में हो रहा है, इस पॉइंट में हो रहा है और ये दोनों पॉइंट में हो रहा है, तो इसको हम लोग हिंज बोलते हैं। जो मैक्सिमम कर्वेचर जिसमें आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हिंज। द हिंज ऑफ द फोल्ड इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन ए फोल्डेड बेड। The hinge of a fold is the line of maximum curvature in a folded bed. It's called the hinge. नेक्स्ट आते मेरा एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस द इंटरसेक्शन। तो एक्सिस क्या होता है? द एक्सिस इज द इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सियल प्लेन एंड द crest or the through of the fold. The intersection between the axial plane and the crest or the through of the fold is called the axis. तो axis क्या होता है? The intersection between the axial plane and the crest or the through of the fold is called the axis. ठीक है, तो कितना टाइप, कितना पार्ट्स ऑफ द फोल्ड तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते मेरा कितना टाइप्स ऑफ फोल्ड होता है। तो फोल्ड्स आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल कैरेक्टर, अपवर्ड और द डाउनवर्ड बेंड। Folds are the classified on the basis of symmetrical character, upward or the downward bend, occurrence of the plunge, uniformity of bed thickness, behavior of the fold pattern with the depth etc. ठीक है, तो हम लोग ना कितना टाइप्स ऑफ फोल्ड होता है। तो कितना टाइप्स ऑफ होता है मेरा? एंटीक्लाइन एंड द सिंक्लाइन फोल्ड होता है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फोल्ड होता है, प्लांजिंग एंड द नॉन प्लांजिंग फोल्ड है, वार्ड टर्न फोल्ड है, ओपन एंड क्लोज फोल्ड है, चिप्रन फोल्ड। तो एंटीक्लाइन फोल्ड क्या होता है? It may be defined as the fold that the convex upward and the two lines the deep away from each other. In such a fold, the older rocks occur in the center. अच्छा रुक जाओ, older rocks occur in the center. तो एंटीक्लाइन क्या होता है एंड द सिंक्लाइन क्या होता है? कोई बताओ, एंटीक्लाइन क्या होता है? It may be defined as the fold that is the convex the upward. ठीक है, and the two lines that deep away from each other. In such a fold, the older rocks occur in the center, called the anticline. The anticline क्या होता है? It may be the defined as the fold that is the convex the upward and the two lines that deep away from each other. In such a fold, the older rocks occur in the center. हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन। और सिंक्लाइन क्या होता है? It may be defined as the fold that is the convex the downward and the two lines that dip towards each other. In this fold, the younger rocks are in the center. ठीक है,
द एंटीक्लाइन में देखो पिक्चर देखो, एंटीक्लाइन और ये मेरा सिंक्लाइन है। ये बाहर वाला देखो मेरा ओल्डर रॉक बेड है और ऊपर उसके बाद देखो अंदर में है यंगर रॉक बेड, ओल्डर बेड एंड द यंगर बेड है। तो एंटीक्लाइन क्या होता है? एंटीक्लाइन इट मे बी डिफाइंड एज द फोल्ड दैट इज द कॉन्वेक्स द अपवर्ड और द सिंक्लाइन when the convex is the downward. ठीक है, it may be defined as the fold that is the convex the upward and the two lines the deep away from each other. In such a fold the older rocks occur in the center. ठीक है, ओल्डर रॉक सेंटर पर आता है एंटीक्लाइन के केस में, और सिंक्लाइन में केस में यंगर रॉक सेंटर में रहता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइन। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड द एसिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है? द सिमेट्रिकल फोल्ड इज वन इन व्हिच द axial plane is essentially vertical or the upright. The axial plane divided the fold into the two equal halves in such a way that the one half is the mirror image of the another. उसके बाद देखो asymmetrical fold। the asymmetrical fold क्या होता है? asymmetrical fold is one in which the axial plane is the inclined। ये एक्सियल प्लेन इंक्लाइंड है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड। इफ द टू हाफ्स आर द नॉट मिरर इमेज देन द फोल्ड इज कॉल्ड द एसिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, एक साइड और एक साइड का मिरर इमेज नहीं शो करते उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड। जब वन साइड और एक साइड का मिरर इमेज है उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। तो सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है? द सिमेट्रिकल फोल्ड इज द वन इन व्हिच द एक्सियल प्लेन इज एसेंशियली वर्टिकल और द अपराइट। द एक्सियल प्लेन डिवाइड्स द फोल्ड इनटू द टू इक्वल हाफ्स in such a way that the one half is the mirror image of another. The asymmetrical fold is one in which the axial plane is the inclined. If the two halves are the not mirror image, then the fold is called the asymmetrical fold. ठीक है, ये नेक्स्ट आता है मेरा प्लंजिंग फोल्ड एंड द नॉन प्लंजिंग फोल्ड। तो प्लंजिंग फोल्ड क्या होता है? देखो ये मेरा ये सिमेट्रिकल फोल्ड है, इंक्लाइंड है एक्सियल प्लेन और इसका एक्सियल प्लेन इंक्लाइन नहीं, वर्टिकल और द अपराइट है सिमेट्रिकल फोल्ड के केस में। तो प्लंजिंग फोल्ड क्या होता है? इफ द एक्सिस ऑफ द फोल्ड इज द inclined then it is called a plunging fold. On the other hand, if the axis of the fold is horizontal then fold is called the unplunging fold. देखो सिमेट्रिकल फोल्ड में एक्सिस देखो वर्टिकल होता है और एसिमेट्रिकल फोल्ड में
ये होता है मेरा इंक्लाइंड एक्सिस। यही डिफरेंस है सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड द एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। उसमें देखो नेक्स्ट आते हैं प्लांजिंग फॉल्ट एंड द नॉन प्लांजिंग फॉल्ट। तो प्लांजिंग फॉल्ट क्या होता है, इफ द एक्सिस ऑफ द फॉल्ट इज द इंक्लाइन देन इट इज कॉल्ड द प्लांजिंग फॉल्ट, and on the other hand if the axis of the plane is the horizontal then the fault is called the non-plunging fault। ठीक है, ये fault and the non-plunging fault। देखो, if the axis of the fault is inclined then it is called the plunging fault, on the other hand if the axis of the fault is horizontally, देखो ये inclined है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लंजिंग फोल्ड। एक्सिस इंक्लाइंड है और इसका देखो हॉराइजेंटल है, इसका जो एक्सिस है हॉराइजेंटल है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्लंजिंग फोल्ड। If the axis of the fold is inclined then it is called the plunging fold, on the other hand if the axis of the fold is horizontal then the fold is called the non plunging fold। ठीक है, तुम लोग एक बार देख लो प्लंजिंग फोल्ड एंड द नॉन प्लंजिंग फोल्ड। The plunging fault, if the axis of the fault is inclined then it is called the plunging fault, on the other hand if the axis of the fault is horizontal then fault is called the non plunging fault। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते मेरा ओवर टर्न फोल्ट। तो ओवर टर्न फोल्ट क्या होता है, इन द सिंपल फोल्ट द लाइन्स shows the order of superposition of the beds, but when the one of the lines is overturned the order of superposition of beds in that particular line will be in the reverse order, such the fault is the called and the overturn fault। ठीक है, ओवरटर्न फोल्ट में देखो मेरा ओल्डर सिंपल फोल्ट है, सिंपल फोल्ट है, और ये मेरा ओवरटर्न फोल्ट है। ओवरटर्न फोल्ट विथ द रिवर्स ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन है इधर वाला, और उधर देखो लाइन विथ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन। तो ओवरटर्न फोल्ट क्या होता है, इन ए सिंपल फोल्ट द लाइन शोज द ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द बिट्स, but when the one of the line is overturned the order of superposition of bit in that particular line will be in reverse order, such that the fault is called the overturn fault। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये नेक्स्ट आती है मेरा ओपन एंड द क्लोज फोल्ड। क्या होता है,
If the thickness of the bed is uniform throughout the fold, it is called and the open fold. On the other hand, if the bed are the thinner in the line portion and thicker at the crest and the through, such fold is called the close fold. ठीक है? If the thickness of the beds is the uniform throughout the fold, is called the open fold. On the other hand, if the beds are thinner in the line portion and thicker at the crest or through such, the fold is the close fold. देखो क्लोज फोल्ड में क्या है, क्लोज फोल्ड में जो लाइन पोर्शन होता है, द थिनर इन द लाइन पोर्शन एंड द थिकर होता है एट क्रेस्ट एंड द थ्रूज. क्रेस्ट एंड थ्रूज में थिकर होता है और लाइन पोर्शन में थिनर होता है. देखो लाइन पोर्शन इसका थिनर है, इसको हम लोग बोलते लाइन, और इसको हम लोग क्या बोलते क्रेस्ट, और इसको हम लोग बोलते थ्रू. If the beds are the thinner in the line portion and the thicker at the crest and the through, such fold is called the close fold. If the thickness of the bed is uniform throughout the fold, is called as the open fold. तो मेरा सिपरॉन फोल्ड. देखो सिपरॉन फोल्ड क्या होता है. सिपरॉन फोल्ड इज वन इन व्हिच द हिंज आर द शार्प एंड द एंगुलर. इसको हम लोग बोलते हैं सिपरॉन फोल्ड. सिपरॉन फोल्ड क्या होता है. द सिपरॉन फोल्ड इज वन इन व्हिच द हिंज आर द शार्प एंड द एंगुलर. इसको हम लोग बोलते हैं सिपरॉन फोल्ड. देखो इसका जो हिंज वाली जो पोर्शन है वो शार्प एंड द एंगुलर है, शार्प एंड एंगुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं सिपरॉन फोल्ड. एंगुलर क्रेस्ट एंड द थ्रूज. फिर नेक्स्ट आता है मेरा आइसोक्लाइन फोल्ड. तो आइसोक्लाइन फोल्ड क्या होता है. द आइसोक्लाइन फोल्ड इन व्हिच द टू लाइन्स डिप एट इक्वल एंगल इन द सेम डायरेक्शन. दिस आइसोक्लाइनल फोल्ड्स may be vertical or the inclined or the horizontal. These folds have the same angle and are the parallel to each other. Isoclinal fold, a isoclinal fold in which the two lines dip at equal angle in the same direction. This isoclinal fold may be vertical or inclined or the horizontal. These folds have the same angle and the parallel to each other. देखो ये दोनों पैरेलल रहता है और सेम एंगल भी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्लाइनल फोल्ड. ठीक है, समझ में आया. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा रिकम्बेंट फोल्ड. तो रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है. देखो स्नेक जैसा दिखना होता है. रिकम्बेंट फोल्ड इज वन इन व्हिच द एक्सियल प्लेन इज एसेंशियल हॉरिजॉन्टल. All recumbent fold is satisfactorily exposed. The available may be tracked back to the root zone, that is the place on the surface of the earth
from which they arise. देखो, isoclinal fold have the same angle and the parallel to each other होता है, सेम एंगल रहता है. जो टू लाइन्स इक्वल एंगल रहता है एंड द सेम डायरेक्शन रहता है. और रिकम्बेंट फोल्ड में एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल रहता है. ठीक है. द प्लेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अराइज है द आइसोक्लाइनल फोल्ड एंड द रिकम्बेंट फोल्ड. समझ में आया? देखो ये मेरा रिकम्बेंट फोल्ड है, तो एक्सियल प्लेन इसका हॉरिजॉन्टल है. को एडमिट कर लेती हूँ सबको. ये मेरा आइसोक्लाइनल फोल्ड. आइसोक्लाइनल फोल्ड में क्या होता है? फोल्ड हैव द सेम एंगल एंड एट पैरेलल टू ईच अदर. देखो पैरेलल टू ईच अदर, तो सेम एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्लाइनल फोल्ड. रिकम्बेंट फोल्ड जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टली रहता है, एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड. Recumbent fold क्या होता है? The recumbent fold is the one in which the axial plane is essentially horizontal.
ये देखो नेक्स्ट है मेरा फैन फोल्ड। तो फैन फोल्ड क्या होता है? इन द सिंपल एंटीक्लाइन द लाइन्स dip away from one another, and in the simple syncline the lines dip towards each other. In case of the fan fold this is the just the opposite. तो fan fold क्या होता है? Fan fold the two lines that the fan fold the two lines that dip in the simple anticline the lines that dip away from the one another, and in the simple syncline the line dip towards is the other. In case of the fan fold देखो this is the just the opposite. तो fan fold क्या होता है? The two lines that dip towards each other. In case of the anticline fan fold, and the two lines that dip away from each other in case of the syncline fan fold. तो anticline fan fold में the two lines that dip towards each other in case of the anticline fan fold, and the two lines that dip away from each other in case of the syncline fan fold. तो मेरा नॉर्मल टाइप ऑफ फोल्ड, ये मेरा फैन फोल्ड है, ठीक है। जब देखो द लाइन्स दैट डीप अवे फ्रॉम वन अनदर एंड इन द सिंपल सिंक्लाइन द लाइन्स दैट डीप टूवर्ड्स इच अदर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन एंड द सिंक्लाइन। बस इसका जस्ट ऑपोजिट है फैन फोल्ड का, द टू लाइन्स दैट डीप टूवर्ड्स इच अदर। ये मेरा सिंक्लाइन है और ये मेरा एंटीक्लाइन है। जब टू लाइन्स दैट डीप towards each other in case of the anticlinal fan fold, the two lines that dip away from each other in case of the synclinal fan fold. वो देख लो तुम लोग, और ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ का एंटीक्लाइन है, सिंक्लाइन और ये जियो एंटीक्लाइन एंड जियो सिंक्लाइन, उसके बाद मेरा ड्राफ्ट फोल्ड है। देखो फैन फोल्ड में the two lines towards is the other in case of the anticlinal fan fold, and the two lines that dip away from each other in case of the synclinal fan fold। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट आता है मेरा एंटीक्लाइनोरियम एंड द सिनक्लाइनोरियम। एंटीक्लाइनोरियम क्या होता है एंड द सिनक्लाइनोरियम क्या होता है? देखो एंटीक्लाइनोरियम क्या होता है? ये द मेजर एंटीक्लाइन दैट इज द composed of the many smaller fold is called and the anticlinorium. Synclinorium is the large syncline also and composed of the many smaller fold too. जब एक एंटीक्लाइन का मतलब मेजर एंटीक्लाइन का अंदर जब छोटा छोटा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। और जब एक सिंक्लाइन का अंदर बड़ा वाला मेजर वाला जो कोई सिंक्लाइन है उसके अंदर देखो जब छोटा छोटा रहता है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइनोरियम। ठीक है, समझ में आया? मतलब ऐसे होता है सिर्फ। देखो इसका अंदर जब एंटीक्लाइन का अंदर जब छोटा छोटा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। जब सिंक्लाइन का अंदर जो छोटा छोटा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइनोरियम।
A major anticline that is the composed of the many smaller fold is called and the anticlinorium. The similar at the synclinorium is the large syncline also composed of the many smaller fold too. एक बार देख लो anticlinorium and the synclinorium. Anticlinorium, a major anticline that is composed of the many smaller fold is called and the anticlinorium. As similar as the synclinorium is the last syncline also composed of the many smaller fold too. इसको हम लोग बोलते हैं synclinorium. ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसको हम लोग बोलते हैं synclinorium. जब syncline का अंदर जो छोटा छोटा रहता है. तो देखो नेक्स्ट है मेरा जियो एंटीक्लाइन एंड द जियो सिंक्लाइन. द एंटीक्लाइन and the syncline which is the normal shape but of the very large magnitude are called the geoanticline. और इसको हम लोग giant anticline भी बोलते हैं and the geosyncline भी बोला जाता है. तो anticline and the syncline with the normal shape but of the very large magnitude are called the geosyncline. मतलब जिसको हम लोग giant एंटीक्लाइन बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जियो एंटीक्लाइन, और जिसको हम लोग जाइंट सिंक्लाइन बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्लाइन. मतलब जब एंटीक्लाइन बहुत बड़ा मेजर शेप का होता है उसको हम लोग बोलते हैं जियो एंटीक्लाइन. तो जियो सिंक्लाइन इज ए द लार्ज डिप्रेशन 100 of miles long and tens of miles wide in which the sediments accumulated to greater feet. ठीक है, तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरा नॉर्थ अमेरिका में है द जियो सिंक्लाइन जो 40,000 फीट डेप्थ इसका नाम है एपालासियन. तो नेक्स्ट है मेरा द कॉर्डिलिरम.